might be knowing that Mahatma Gandhi, when he was in South Africa on his way back, he visited Mauritius. And he was shocked to find the situation in which the Indian people were living in Mauritius. The way they were ill-treated. They were deprived of all fundamental rights. In fact, indentured labor meant another form of slavery. He sensitized the population that said they should wake up. They should start asking for their rights. They should start sending their children to school. Because in those days, those people, they didn't believe in sending children to school. Because they believed that if children would be educated, they would not work in the field. And as things were in those days, there was no chance of their getting a job in either public sector or private sector besides the job of laborer. And they believed that if they were not to get a job, then they will start robbing, stealing to get their livelihood. That was what scared them and discouraged them from sending their children to school. But Mahatma Gandhi, he was able to persuade them that that was wrong thinking, that in fact education was a fundamental right of children, and that it's only with education that our population could progress and then claim all the other rights which were enjoyed by the others in the country. And Mahatma Gandhi was perfectly right. Our people listened to him, and when he came back to India, he sent Manilal Doctor there to pursue the work which he had started. And Manilal Doctor stayed for years over there and served the people of Mauritius, educated the people of Mauritius. And gradually the people of Mauritius, they became conscious of their rights. They started claiming their rights. And finally there were several royal commissions, and by all their rights were given to them. Finally the right to vote also, because before that they had no right to vote. But the first step was based on literacy. The person to be entitled to vote was to be able to sign his name. And after that we got universal suffrage, and after universal suffrage we got first self-government and then complete independence, Swaraj, as you know it. And Mauritius became completely independent, and Mauritius is today a free, democratic country, democratic in the true sense of the word. There we have the judiciary, which is completely independent. There is never any pressure on the judiciary, and you can rely completely insofar as justice is concerned. And today we are proud that Mauritius, which was such a poor country, which at one time relied only on sugar, today has many pillars of economy, solidly diversified and prospering. When I first became Prime Minister, the income per capita was about $200 US. Today it is about $6,000 US. This shows the progress that Mauritius has made and has been making and will continue to make. But Mauritius is not only prospering, Mauritius is also a welfare state. You know, in Mauritius we have free education, completely free, from pre-primary to secondary, and we have a university at tertiary level. It is highly subsidized. We have completely free medical services. We have a universal pension
for everybody who reaches the age of 60. We have also a social security ministry which helps people who are in difficulties, people who are jobless, people who are handicapped, people who have been victims of accidents. And you will be surprised to know that after the last election, the new government has also granted free transport to all people, as we know them in Mauritius, old age pensioners, and all students travel free. They don't have to pay travel fares. So you can realize when Mark Twain said that besides the beauty of Mauritius, that God made Mauritius first and copied paradise from Mauritius, while we are making it come true. That is why I invite you all to come to Mauritius, at least visit Mauritius. Come and visit the paradise. And we, especially I, as Prime Minister, as politician, as President, I have always firmly believed in Ayurveda. I have always encouraged Ayurveda. I have given to certain promoters land to make Ayurveda centers, but not international, not as big as yours, because our country is too tiny. They are compared to yours, your center here is going to be a giant, whereas we will be a dwarf. But the fact is that we believe in Ayurveda. I personally believe a lot in Ayurvedic medicine, because Ayurvedic medicine is more preventive. If you practice, you take certain medicines, if you practice yoga, then diseases will always be running away from you. Otherwise they will be running towards you. So that is why I congratulate the promoters of this center, and it makes me extremely happy to have my name associated with this center. I pray God for His blessing so that it is completed in all stages as early as possible, and I hope that one day when it is in operation, in full swing, I will have the opportunity to visit it. I also hope that this is going to be of great help, not only to the people of Maharashtra, to the people of India, and to the people of the world. So God bless you all, and thank you for your attention. A lot of thanks to you, sir. Ayurveda, science of life. I should tell you one thing. We are covering allopathy, that is also saving life. Science means that is in our definition of Ayurveda. All pathies which are saving life are Ayurveda. And slowly, now it has started, it has started taking its final shape, and it will cover everything. The day is not so far. I am very much thankful to His Excellency. और हमारे मंच से सभी आए हुए प्रधान सज्जनगण नागपुर और बाहर से हमारे सभी भाइयों साथों और छात्राओं, आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर नागपुर के हिस्से में एक नई नींव पड़ी है, और ये आयुर्वेद इंटरनेशनल के माध्यम से जो हमारी शिविर हुई आज तक की आयुर्वेद के विषय में जानकारियाँ थी, उनको सब ऊपर लाकर उभार कर सामने रखा जा रहा है। कि विश्व में यह तो स्वीकारा गया है, यह जो साइंस है आयुर्वेद की सबसे प्राचीन तो विश्व में है ही, इसके संचन इसमें साइड इफेक्ट्स वगैरह बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं और काफ़ी लाभदायक है। ये सभी प्राकृतिक साधनों से सब चीज़ें दवाइयाँ बनती हैं। इन सब चीज़ों में लेकर जो प्रयास डॉक्टर तिवारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। उनके लिए मैं अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, कि आप लोगों की तरफ से भी मैं उनको बधाई देता हूँ। इसलिए वहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बाहर से ट्रीटमेंट कराने के लिए या ऐसे टूरिज्म के लिए
हेल्थ टूरिज्म के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। खाने की व्यवस्था कई 5 स्टार होटल नागपुर में आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं में आयुर्वेदिक ये सब व्यवस्थाएं रहने पर यह जो विदेश से भ्रमण करने वाले हैं उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऐसी चीज़ें जिलों में अपने पंचकर्म वगैरह ये सब चीज़ें दूसरे देशों में नहीं हैं और इसे जहाँ कहीं भी अभी शुरू किए गए हैं, खासकर केरल में या अन्य समुद्र तटीय टूरिस्ट स्थानों में किए जा रहे हैं, तो बहुत ही सफल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हो जाएगा तो संग जो अपना ट्रीटमेंट दूसरे रोग हैं उनके लिए जो आएंगे तो उसमें आयुर्वेद का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा मिलेगा और लोग काफ़ी प्रसन्नचित रहेंगे। मैं सिर्फ अनुरोध यही है कि कितना शीघ्र कितना जल्दी इस योजना को क्रियान्वित करके और अपने रूप में प्रारंभ लाया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मॉरिशस के राष्ट्रपति जी कि उनके हाथ से न्यू पढ़ना इसका बड़ा शुभ मुहूर्त में डाला गया है और इसमें हमें ये सूचनाएं बाहर के देशों में भी जाएंगी कि ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नागपुर में बन चुकी है। बस अब हम आशा ही कब करेंगे तब इसका उद्घाटन कितने समय में हो। धन्यवाद। यहाँ पर आयुर्वेदा इंटरनेशनल का जो स्टोन फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ, इस अवसर पर बहुत कम समय में क्यों न हो मगर महामहिम श्री जगन्नाथ जी इन्होंने डॉक्टर तिवारी जी की बात मानकर यहाँ पर आए। उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय जो यहाँ दिया। मैं इंटरनेशनल आयुर्वेदा डॉक्टर तिवारी जी और यहाँ पर जो उपस्थित सब जो छात्राएं और हमारे नागपुर शहर के तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो आप यहाँ पर आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। उसी प्रकार बहुत कम समय में हमारे राज्य के मंत्री राजेश जी टोपे वो यहाँ पधारे और उन्होंने भी असेंबली चालू होते हुए भी यहाँ पर जो समय दिया उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ के उद्योगपति श्री फसललाल जी शाह जो विशेष करके तिवारी परिवार के ऊपर में ज्यादा बहुत प्यार करते हैं, उसलिए भी और यहाँ उपस्थित है उसलिए भी मैं अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। उसी प्रकार मंच पर सरोजिनी जगन्नाथ जी जो यहाँ आए, ये हमारे सम्मान की बात है कि वो भी हमारे देश में यहाँ आए और हमारे शहर के अंदर में आयुर्वेदा आश्रम के लिए उपस्थित हुए। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। इसी प्रकार हमारे यहाँ के धार्मिक साहब, नगर सेविका बड़े दाई और पांडे जी, देवड़ा जी, डॉक्टर तिवारी जी और यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे छात्राओं और शिक्षक और डॉक्टर लोग, उनका भी मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज ये स्टोन फाउंडेशन का कार्यक्रम जो है ये यहीं पर समाप्त होता है, मगर मैं महोदय साहब से कहूँगा कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा वो अल्पहार ले और हमारा थोड़ा मान रखे। धन्यवाद। Ayurvedic students, they wanted to especially interact for 2 minutes with you. Or one or two. one or Not all. not just All one or two. Transportation for even for students, education, can you do something for us for our students' benefit?
That question should be directed to you. No, but I must say also, Odisha, but in parallel, we have also private institutions. And people who want to send their children to those institutions, they pay. They pay also. So here also, those students who are like from scheduled caste, so those students, the 100% fees is paid by government. Yeah. This question of scheduled tribes and all that, they have to be abolished all this nonsense. We will keep on like this. फोटो नहीं काटो फोटो नहीं काटो फोटो निकाल अच्छे से 2-3 फोटो मार के उनके फोटो की जरूरत है Sir, for open children, nothing at sir. General category, she's asking Yeah, yeah, for the yeah. general Jungle category, we have nothing for that. That is our question. Yeah, Sir, I'm asking. yeah. We can sit and we can discuss. ठीक है. There should be interaction also. Yes, बोलू आपण या विषयावर. yes. अभी चोपडे अभी तो फोटो निकाल के हाँ काढला फोटो It's only when it comes that I have to know. चोपडे मारना तो 4-5 मारना नहीं नमस्ते करो Bye bye. Bye bye. चोपडे विदाई चालू आहे बस झालं मागे येऊन जा ना मागे येऊन जा इधर घुमो बोलला घेऊन राहील तर मग पाणी पितो ना पाणी देणार आहे का हो किधर जाना
चोपड़े 3-4 बॉटल पकड़ ले। क्या बोल रहा हूँ? मैं आके बात करता बोलता हूँ राजू से।